Hello, my young friends. I'm Smita Chaudhary back again on your channel, Easy English. Today I'm going to take up a poem of Standard 10, The Tale of Custard the Dragon. This is a poem where we find Belinda. She stays along with few of her the animals. So let's begin, and as we come across, I'll be introducing you to the figures of speech as well as the total explanation of the poem. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a realio trulio little pet dragon. So Belinda, she used to live with the animals. Which all animals that she used to live with? She used to live with a little black kitten, a little grey mouse, a little yellow dog, and a dragon. So 4 animals that she lived with. Now, here we find that a little, just look into this line number 2 and line number 3 of the first stanza. So with a little black kitten, little, and a little, second and third line that it is repeated. This a little, it is when it is repeated, few words, when it is repeated in 2 or 3 lines, it is known as anaphora. So this figure of speech is anaphora. And so here you find that and a realio trulio. So really, there was even a dragon which was living with her. So Belinda, it lived in a little white house. First line, lived and little, starts with L. And so it is alliteration. So Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse. Now, this little pet dragon also lived. It is a fond way of addressing. So, a little pet dragon. Okay, realio, trulio, really, truly, there lived a dragon with her. Now, the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse, she called him Blink. So the names are given. So here we see that kitten was called Ink and the mouse was known as Blink. And the little yellow dog was sharp as mustard. Now here you see and the little in second and third line. Again it is anaphora. So little dog, yellow dog, it is compared with that of mustard. Children, have you all ever tasted mustard? So, mustard, if at all, mustard seeds, if you bite them, how do you feel? A tangy taste. It's a tangy taste. You feel the sharpness of it. Or maybe your mother has made the mustard paste and she keeps it for putting it into all the veggies that she makes. Then taste it. And you will find that sharp taste in it. So, this dog was as sharp as that mustard. So, the dog is compared with that of mustard. This direct comparison with as or like is known as simile. So, this line, so this little yellow dog was sharp as mustard. It is simile. Okay, it is sharp as the mustard, just as the sharpness is there of that mustard seeds, so was this dog. But the dragon was a coward and she called him Custard. So this dragon was a timid one, coward is timid, and so she called him Custard. Why custard? Because generally custard, what you feel, custard when you eat, you feel that soothing, very slimy, and you find that it is very tempting but soothing. Okay, so here custard also used to live a life where it loved
serenity, softness. It wanted to be safeguarded. It wanted to be safe. So we find that it is compared with that of Custard. She called him Custard. Called and Custard starts with C. So the word starting with the same alphabet, it is alliteration. So Custard the Dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Now the physical description of Custard is given. So Custard, he had big sharp teeth. You all must have seen that how when the crocodile or the dragon is drawn, it is made, the sharp teeth are made, and spikes on top. So just as you find even you all must have seen the photos, the pictures of these dragon. So they are having the sharp edges, the spikes on top, and scales underneath. So underneath the body, generally you find just like the fishes or the crocodiles they have. So similarly, this dragon also had the scales underneath. Mouth like a fireplace. Again, mouth is compared with that of a fireplace. So like a fireplace. And just now I told you, if you have a direct comparison with as or like, then it is simile. So mouth like a fireplace is simile. Chimney for a nose. And nose is compared to that of chimney. But here as and like is not used. So this indirect comparison where as and like is not used, this is known as metaphor. Okay, metaphor, metaphor. And realio, trulio, daggers on his toes. So on the toes were having the daggers. This is the nails. So the nails are compared to that of daggers. Belinda was as brave as a barrel full of bears. Again the simile. Belinda is compared with that of barrel full of bears. Barrel is the container, generally the wooden container. So barrel full of bears. Even you see brave barrel bears, all these starts with B. So this is alliteration. And ink and blink chased lion down the stairs. So the courage of different animals is compared over here. So the kitten and the mouse, they were proving, they used to tell that they are so brave that they can chase the lion down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, just as when the tiger is angry, rage is anger. When the tiger is angry, it becomes very brave. The tiger, when it is in anger, it becomes very brave. Mustard was also like that. Again, this is comparison, direct comparison. So it is a simile. It shows the ferocity. So mustard showed the ferocity. But Custard cried for a nice safe cage. So Custard was opposite in nature. Usually the dragon is supposed to be very ferocious, but this was lethargic, lazy. It wanted protection. It was crying for a safe cage. Custard cried cage. It is alliteration. Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. So she tickled him. गुदगुदाती थी Belinda. Unmercifully. बहुत ज़्यादा गुदगुदाती ताकि it becomes very active. Ink, blink and mustard, they rudely called him Percival. Percival, you find that it is generally Percival is the knight who fights with the sword. So, knight of King Arthur's court he was, Percival, okay. And so satirically, ironically, they are saying because he was so lethargic, they used to tell him ironically, ulta bolta tha ki he is like Percival, like a knight who can fight ferociously, who can fight bravely with a sword. They all sat laughing in a little red wagon. So when she used to tickle this Custard, she wanted the Custard to become very active. And then she would make all the animals sit in a wagon, okay.
and then at the realio truolio cowardly wagon. So they all used to sit and laugh seeing the dragon who should be very brave but was not brave at all. So इस पोएम में बेलिंडा रहती थी 4 एनिमल्स के साथ. सो हम लोगों ने देखा है अभी कि वो एनिमल्स किटन था, माउस था, डॉग था और एक ड्रैगन था. एंड हम लोग ये देखे हैं कि यहाँ किटन का नाम इंक था, माउस का नाम ब्लिंक था, डॉग का नाम मस्टर्ड था, वो शार्प था मस्टर्ड जैसा, और ड्रैगन कावर्ड था, उसका नाम कस्टर्ड था. अब कस्टर्ड का डिस्क्रिप्शन इसके बाद 3rd स्टांजा में दिया हुआ है, जहाँ कस्टर्ड को बोला गया है कि उसका शार्प टीथ था, स्पाइक्स था ऊपर में, शरीर के ऊपर स्पाइक्स था. जनरली जो ड्रैगन का फोटोज में देखा गया है, या क्रोकोडाइल के ऊपर भी, क्रोकोडाइल नहीं शार्क के ऊपर देखा जाता है, या फिर वो ड्रैगन के ऊपर दिखता है जो स्पाइक्स, वो स्पाइक्स था. माउथ भी फायर प्लेस जैसा दिखता था, नोज चिमनी जैसा दिखता था, और उसका जो शार्प नेल्स था उसको डैगर के साथ कंपेयर किया गया है. बेलिंडा को वो बहुत ब्रेव थी, बेलिंडा भी बहुत ब्रेव थी. तो सब कितना ब्रेव थे, बेलिंडा और उसके वो सारे साथी जो एनिमल्स थे, सब कितने ब्रेव थे वो भी कंपेयर किया गया है. बेलिंडा एक बैरल होता है, एक कंटेनर. जनरली उसमें जैसे अली बाबा 40 चोर में चोर सब छिपे हुए थे, वो बैरल के अंदर, बैरल में जहाँ ऑयल रखा हुआ था एक में, बाकी सब में चोर थे. वो बड़ा सा कंटेनर, गलीवर्स ट्रैवल में हम लोग देखे हैं कि वो वाइन पूरा बैरल में रखा गया था और वो वाइन पिलाया गया था. लिलीपुट लोग वाइन, वो बैरल भर के वाइन पिलाया गया था गलीवर को. सो ये वैसा ही बैरल भर के जब बेल्स उसके अंदर होते हैं, तो जितना पावर, जितना ब्रेवरी, जितना हिम्मत वहाँ वो बेल्स सबका मिला के होता है, उतना ही हिम्मत बेलिंडा का था. और इंक और ब्लिंक, इतना हिम्मत उन लोग का था कि उन लोग लायन को भी सीढ़ी से दौड़ा के भगा सकते हैं. इंक कौन था? किटन था. ब्लिंक माउस था. तो किटन और माउस में इतना हिम्मत था कि वो लायन को भी चेज करके दौड़ा के भगा सकते थे. मस्टर्ड, टाइगर जब गुस्से में होता है, रेज में होता है, जितना भड़कता है, जितना वायलेंट हो जाता है, उतना ही मस्टर्ड भी वायलेंट था, ब्रेव था. फेरोसिटी उतना ही था मस्टर्ड में. और कस्टर्ड, लेकिन वो तो बड़ा ही लेजी प्राणी था. वो तो सोना पसंद करता था, सेफ बोलता था, हमको एक सेफ एक केज में रख दो बाबा, हमको नहीं चाहिए ब्रेवरी दिखाना. तो कस्टर्ड अपना ऑपोजिट, ड्रैगन जैसे कि वो बहुत ज़्यादा फेरोसिटी का होता है, वैसा कुछ कैरेक्टर नहीं था. ऑपोजिट ऑफ द ड्रैगन्स कैरेक्टर दिखाया गया है इस कस्टर्ड द ड्रैगन को. उस पे वो ड्रैगन का कुछ भी नहीं दिखाया गया कि नेचर जो होता है वो नहीं था. लेकिन इसके बाद वो अपना नेचर खुल के दिखाएगा. बेलिंडा गुदगुदाती थी. बेलिंडा गुदगुदाती थी अनमर्सीफुली, खूब ज़्यादा गुदगुदा देती थी, इसलिए कि ताकि कस्टर्ड थोड़ा एक्टिव हो जाए. इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उन लोग मजाक उड़ा लेता था उसका, उसको पर्सिवल बोलता था. उसको पर्सिवल क्यों बोलता था? पर्सिवल होता है नाइट जो स्वॉर्ड के साथ राजा के किंगडम में स्वॉर्ड फाइटर जो होता है, उसको नाइट्स को बोला जाता है. वो पर्सिवल था. नाइट ऑफ किंग आर्थर का कोर्ट का जो नाइट था उसका नाम था पर्सिवल. तो उतना ब्रेव था,
लेकिन कस्टर्ड जो एकदम लेजी था, जो एकदम कावर्ड था, टिमिड था, डरपोक था, उसको उस पर्सिवल के साथ कंपेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि वो तो उल्टा, उसका मजाक उड़ाते हुए ये कंपैरिजन किया गया है। जैसे कि हम लोग ठीक उल्टा बोलते हैं ना, कि जब बहुत ठंड पड़ती है तो हम लोग बोलते हैं अरे बाप रे ये कितना गर्म है, वैसे ही उल्टा इसको आयरनी, इस फिगर ऑफ स्पीच को आयरनी बोला जाता है। वैसे ही उल्टा उसको बोलाया गया क्योंकि वो बहुत कवर्ड था, तो उसको बहुत हिम्मत वाला बोला गया। They all sat laughing in the little red wagon, और सारे एनिमल्स को बेलिंडा एक वैगन के, एक ट्रॉली जैसा होता है, वैगन के अंदर बिठा देती है और सब कोई मिलके हंसता है ये ड्रैगन का नेचर देख के। ठीक है, सो इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल. They all sat laughing in the little red wagon at the realio trulio cowardly dragon. तो ड्रैगन को देख के सब उसका मजाक उड़ाते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया। आई फील दैट यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। आई स्पोक इन बोथ द लैंग्वेजेस. आई बिकेम बायलिंगुअल पर्पसली सो दैट यू अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली। जिसको भी जो लैंग्वेज में समझ में आए, दोनों को कैटर करते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में वी विल बी टेकिंग इट अप अगेन द रेस्ट ऑफ द पोएम। इसके बाद हम लोग फिर से सेकेंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।